बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। So students, I very welcome you all to this MCGM VTC online video session, and in this session students we are going to learn about equation. So in standard 6th and mathematics subject, our today's topic is equation, and we'll do the practice set 26 also in this session. Okay, so let us start from this presentation. Students, you know very well about the addition and subtraction and division and multiplication, and you know tables very well. So if here is one number is on your screen, so if we are doing multiple operations, the answer will be 8 here. Just see how it will be. So if we do 3 plus 5, so answer will be 8, right? If we are doing 3 plus 5, answer will be 8. If we are doing 12 minus 5, so if we are doing 12 minus 5, the answer will be if we are doing 12 minus 4, answer will be 8. Okay, so if we are doing 12 minus 4, answer will be 8, right? And now we'll move for the another operation, and that is multiplication. If we are doing 4 into 2 or 2 into 4, so answer will be 8 only. Okay, if we are going for the another function, and that is division, 24 is divided by 3, and you know when we are doing division of 24, we'll get the answer here 8, right? तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि एवरी टाइम हमने यहाँ पर आंसर जो है तो 8 देखा है ना। अगर हमने यहाँ पर एडिशन किया तो यहाँ पर देखा आपने 3 प्लस 8 किया तो यहाँ 3 प्लस 5 किया तो हमें यहाँ पर 8 मिला है। इसी तरह से 12 माइनस 4 किया तो हमें यहाँ पर जो है तो 8 मिला है, राइट। अगर हमने यहाँ पर 12 इंटू 2 इंटू 4 किया है तो आंसर हमें यहाँ पर 8 मिला है। इसी तरह से if 24 is divided by 3, we are getting the answer here 8. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने मल्टीपल फंक्शंस किए हैं, है ना। हमने यहाँ पर एडिशन भी किया है, यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन भी किया है, यहाँ पर हमने डिवीजन भी किया है, एंड यहाँ पर हमने तकसीम भी की। तो एवरी टाइम यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला है, 8 मिला है। कितना मिला है आंसर हमें यहाँ पर, 8 मिला है ना। तो हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आती है, हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इफ़ वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 2 into 4, we are getting the answer 8. If we are doing addition 5 plus 3 or 3 plus 5, we are getting the answer 8. So here after doing the multiple operation, means here we are doing multiplication, here we are doing addition, and we are getting the answer same 8. So
it means that this balance of number is same here. Okay, now we do the another one here. 24 is divided by 3 is equal to 12 minus 4. So you will see here, while we are doing division, 24 is divided by 3, we are getting the answer 8. Okay, if we are doing subtraction, means we are doing 12 minus 4, we are getting the answer 8 here also. So here just we realize that the answer is a balanced answer here, means this is a equal answer, right? 8 is equal to 8, है ना? 8 8 के बराबर है ना? तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, राइट? क्या समझ में आता है हमें यहाँ पर कि ये 8 और ये 8 जो है तो बराबर है, राइट? तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 plus 3 or 3 plus 5 gives 8, 12 minus 4 gives 8, 3 into 4 gives 8, 24 divided by 3 gives 8. All the operations give the same result, like 8. Okay, so we can write this as 12 minus 4 is equal to 8, or 3 plus 4 is equal to 8, or 2 into 4 is equal to 8, or if we are doing another one, 24 is divided by 3 and the answer is 8. Okay, so the sign of equality, you're observing here, the sign of equality shows that the number on both sides are equal. Okay, this sign is showing us that this 8 and this 8 is equal, right? Means 2 into 4 is equal to 3 plus 5, right? So we can also write the same equation as 12 24 divided by 3 is equal to 8, or 12 2 into 4 is equal to 8. Okay, these all equations can be written like this: 2 into 4 is equal to 3 plus 5, or 24 is divided by 3 is equal to 12 minus 4. So here we can understand that the new equation written by interchanging two sides of equation, it is also correct, that is balanced. Okay, if there are equal weights in both pans of weighing scale, then the scale is balanced. Okay, such a balanced scale is like an equation. मसावत के दोनों तरफ़ैन को एक दूसरे से बदल कर लिखने से बनने वाली मसावत भी दुरुस्त या मुतवाज़िन होती है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ओके, so if there are equal weights in both pens of weighing scale, then the scale is balanced. Such a balanced scale is like an equation. So
you have an example of any, we can take the example of while you are going to purchase something from a shop, then you observe that the weighing scale, and you will observe that the scale is balanced, then your what things you are purchasing from there, you will get the proper if the scale is balanced there. So you will observe there that if you are going to purchase the 500 gram of sugar, and you will observe that the shopkeeper till not dropping properly the sugar on that particular pan, the scale will not balance, and as the level of that sugar will reach up to 500 grams, the scale will be balanced there. So this kind of examples you observe in your daily life. So this you will see that the pen of that weighing scale will be balanced after the equal weight, right? So if there are equal weights in both pairs of weighing scale, then the scale is balanced. Such a balanced scale is like an equation. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मसावात के दोनों तरफ हैं, दोनों तरफों को, यानी कि हम देखते हैं कि मसावात में जो बराबरी की अलामत है ये, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरफ यानी बराबरी की अलामत के इस तरफ और बराबरी की अलामत के इस तरफ को एक दूसरे से बदल के लिखने से बनने वाली मसावत भी दुरुस्त या मुतवाज़न होती है। जस्ट हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखी थी, राइट, इस तरह से। Now we are going to solve the practice set 26 here. So different mathematical operations are given in the two rows below. Find the number you get in each operation and make the equation. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दो सत्रों में मुख्तलिफ रियाजियाती अमल दिए हुए हैं और हर अमल से जो अदद हासिल होता है वो मालूम करके मसावतें बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सो इज़ 16 divided by 2, 5 into 2, 9 plus 4, 72 divided by 3, 4 plus 5, 8 into 3, 19 minus 10, 10 minus 2, 37 minus 27, 6 plus 7. Like these are the questions and we are supposed to solve it first, and after getting the answer we are going to observe the equations here. Okay, so first 16 is divided by 2 and you will get the answer 8 here. Okay, now the second one, 8 into 3, you will get answer 24. Then 5 into 2, you will get the answer 10. 19 minus 10, you will get the answer 9. Thereafter 9 plus 4, you will get the answer 13. Then 10 minus 2, so the answer will be 8. Thereafter 72 is divided by 3, you will get the answer 24. Then 37 is minus 27, so answer will be 10. And 5 plus 4 is equal to 9. 4 plus 5 is equal to 9, and 6 plus 7 is equal to 13. So here are all the answer on your screen. Okay,
So the answer is on your screen here. Okay, so to what suppose we have to do here, what the question is here, different mathematical operations are given in the two rows below. Find out the number you get in each operation, make equations. And now see here that after doing different mathematical operation we are getting some answer which are same. Okay, as for example we are observing this 16 is divided by 2 and answer we are getting is 8. And this one you will observe here 10 minus 2 is equal to 8. Okay, so you will see here the answer after doing the different mathematical operations we are getting the same answer. Means if we are doing 16 divided by 2 we are getting the answer 8. If we are doing 10 minus 2 we are getting the answer 8 here. So you see here 16 divided by 2 is equal to 10 minus 2. Okay, so we'll get this one. Okay, this one here. तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ अमल करने के बाद भी हमें यहाँ पर 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मसावात जो है तो यहाँ पर बनती है ना। यानी हम देखेंगे बराबरी की अलामत जो दी हुई है यहाँ पर, ये बराबरी की अलामत के पहले भी हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और यहाँ बराबरी की अलामत के बाद भी अगर हम देखते हैं कि 10 माइनस 2 किया तो हमें यहाँ पर 8 मिल रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरी जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है 5 इंटू 2 अगर हमने किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10, राइट। अभी इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि इफ वी आर डूइंग 37 minus 27, so we are getting the answer here 10. Okay, so after doing multiplication and after doing subtraction we are getting the answer 10. Okay, so here are 5 into 2 is equal to 37 minus 27. Okay, why? Because we are getting answer 10 here also and here is also a 10. Okay, so in the same way we are observing that this is a equation 5 into 2 is equal to 37 minus 27. Okay, like this. Now we'll move for the another one is 9 plus 4 is equal to 6 plus 7. Okay, so you will see here that 9 plus 4 is equal to 8 and 9 plus you'll observe here 9 plus 4, this one 9 plus 4 is equal to 13 and 6 plus 7, this one is 13. Okay, so you are observing here that 6 plus 7 is equal to 13. So every time you are observing that answer is 13. Okay,
So we can write it in equation 9 plus 4 is equal to 6 plus 7, like this. Okay, so we'll observe here the another question, and that is 72 is divided by 3. So you will observe that the answer is 8 here. Okay, so here's the answer is 24, and you will see here 8 into 3, we are getting the answer here 24. Okay, so you will see here that 72 is divided by 3 is equal to 8 into 3, means we are getting the answer here 24. Okay, and here also we are getting the answer 24. So 72 is divided by 3, we are getting the answer 24. 8 into 3, we are getting the answer 24, means 72 divided by 3 is equal to 8 into 3 is our equation here. Okay, इसी तरह से हम यहाँ पर एक दूसरा जो है तो सवाल यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं 8 प्लस 4 प्लस 5 दिया हुआ है। 4 प्लस 5 अगर हम देखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 19 माइनस अगर हमने किया, यहाँ पर 19 माइनस 10 किया तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 9। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 9 मिला है, यहाँ भी 9 मिला है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9 जमा ये सॉरी 4 जमा 5 किया तो 9 मिला है। इसी तरह से यहाँ पर 19 माइनस 10 किया तो भी हमें यहाँ पर 9 मिला है। इसलिए हम कहेंगे कि 9 जमा 5 बराबर 19 नफ़ी 10। ये क्या है, एक यहाँ पर मसावात है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसके बराबर हमें मिल रही है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि हर अमल से जो अदद हासिल होता है वो हमने यहाँ पर मालूम करके मसावातें तैयार की है ना। सो वी जस्ट फाइंड आउट द नंबर we get in each operation and then we reach to the equations here. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। So hope you students that you understand this method of understanding of equations. So after the session you are supposed to practice to this question and try to do it from yourself. Okay, best of luck. Assalamu alaikum.